इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में हमें आज का और कल का 2 दिन चाहिए होगा हमें, और हमें जो वी हैव टू डू इट इज pollution chapter. Okay, that the topic is, I say, air pollution, water pollution, and जब आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोल्यूशन है वो है एयर एंड वाटर पोल्यूशन, उसके बाद तो सारी औपचारिकता ही रह जाएंगी. देयर इज अ काइंड ऑफ व्हाट लैंड पोल्यूशन. And if you are in my geography classes, you have heard so many times कैसे soil land, अभी भी मैं थोड़ा थोड़ा बताते आता हूँ कि acid rainfall over the land is getting polluting and all. So we are putting lots of fertilizer, lots of pesticides, and itself we are polluting. And आप लोग करना क्या है? You have to keep on noting down whatever you are considering. Instead of writing all, as far as the PT is concerned, you put it. Okay, so we have to do the major pollution. I say, which pollution? Air, water. थोड़ा सा और आज हम लोग शायद इसको फिनिश कर सकें, and then tomorrow it will be land pollution or some possibly if we'll think noise will do, then we'll do, और e-pollution भी होता है. आज के डेट में क्या हो रहा है? गार्बेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, गार्बेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. So pollution, what is the meaning of pollution? If you see, what is the meaning of pollution? Yes, anybody? Okay. Yeah. Just tell me. Pollution means, I said that it is a degradation of the quality. It is a degradation of the quality. यदि मुझे एयर की बात करना है तो मैं क्या बोलूँगा? Yes, it is a degradation of the quality of atmosphere. It is a degradation of the quality of atmosphere. कर रहे हैं? Yes. And through which or by which? By the human being factor, who is anthropogenic factor. And what the anthropogenic factor कर रहा है? Anthropogenic factor क्या कर रहा है? Exploitation of the resources. Yes, yes, beyond the capacity. Yes, yes or not? Beyond the carrying capacity of an ecosystem. So I said that it is a degradation of the quality of atmosphere. It is an air pollution. I said that. ध्यान से समझे पहले. It is a degradation of the quality of atmosphere by the through the exploitation done by human being factor. Through the exploitation done by human being factor beyond the carrying capacity of ecology, ecosystem. और ये पहले भी हम लोगों ने बात किया था ecological footprint में. Yes or not? कार्बन फुटप्रिंट में हमारे पास लैंड इतना है, लैंड को हम लोग ज्यादा ले रहे हैं. यस, फार्म इतना है, फॉरेस्ट को काट के और फार्म लैंड बढ़ा रहे हैं, फॉरेस्ट को डिक्रीज कर रहे हैं. वी आर व्हाट इज एन पर नंबर ऑफ पीपल नीड मोर फॉरेस्ट एंड देन रिमूविंग इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, इफ यू रिमेंबर. एंड ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में हमने बोला था कार्बन फुटप्रिंट. यस और नॉट? So everyone is contributing something in the what contribution of greenhouse gases. तो इसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं? We are doing the exploitation of natural resources. Understood? So it is through the exploitation done by the what? It is an exploitation of natural resources by anthropogenic
factor which indirectly and directly harming the, which directly or indirectly harming what? Living beings, flora and fauna. Understood? Directly or indirectly harming which one? Yes, tell me. Flora or fauna on this earth's surface. Understood? So it becomes which I said a kind of vicious cycle जिसमें exploitation और भी बढ़ता जा रहा है due to increase in the population. I said that हम लोगों ने एक क्लास किया था ecological imbalance, and ecological imbalance में I have told you that what are the factors. उसमें pollution, population सब बताया था मैंने. Population is also. So what will be the definition of pollution? I said degradation of the quality of atmosphere through the exploitation of natural resources by human being, which directly or indirectly affecting flora and fauna. Understood? Which directly or indirectly affecting understood it? रुको